Honorable Minister, my elder brother, Adharaniya Arjuramji, Mr. Surana, who's been an old associate, Faruqi Saab, Gupta ji, and all other eminent present on the dais. And my dear students, it's indeed a very moving moment for me because I'm not a standard politician by any definition. I mean, good, she mispronounced or she rather, misnamed me 2-3 times as a bureaucrat because I'm more of an academic than a politician. Rajneta to main bahut कहना चाहिए कि I'm an accidental politician that way. So it is very moving moment and emotional moment for me. And Surana ji, thank you very much for this invitation. The reason being, I've taught in the NIT, National Institute of Technology, for about 12 long years. So I've only been part and parcel of an engineering community for a very long time. और इसलिए मेरे लिए बहुत ही ये अद्भुत क्षण है क्योंकि एज ए टीचर जब आप स्टूडेंट से बात करते हैं तो आपको पता होता है कि आप एक पूरी जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं। आज आप सब लोगों को, कुछ लोगों को मैं अपने टेलीफोन से, स्मार्टफोन से जब इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड करते हुए देख रही हूँ, कुछ लोगों को लाइव ट्वीट करते हुए देख रही हूँ, कुछ लोगों को ये देख रही हूँ कि दे आर लुकिंग एट अस एज इफ वी हैव सम आंसर्स टू देयर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस। तो द टीचर इन मी टेल्स मी कि सर, इंडिया का टाइम अब आ चुका है। India's time is just right for us. Very right, Surana ji said. यहाँ हमारे पास में एक ऐसा लीडर उपलब्ध है, ऐसा विजनरी लीडर उपलब्ध है जो ये देख रहा है कि टेक्नोलॉजी से ई गवर्नेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। I mean, I am very much with you, Gupta ji, when you said that it has to be transparent. But transparency is not the key thing here. The key thing here is transformation. You transform the entire delivery system and the system of management and the system of understanding that management because of 3 things. Number 1, we are from the dull countries, we are now in the countries that are making a mark. We are amongst the 5 big countries. But these 5 big countries are not having situation like us. That is, we are in a unique situation. Let me tell you how. We are with demographic dividend. You all must be knowing what demographic dividend is. India अब आने वाले 10 वर्षों में सबसे जवान देश के तौर पर उभरने वाला है। इसके 3 एस्पेक्ट्स होंगे। नंबर 1, आप लोग स्किल बहुत बेहतरीन काम करेंगे एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ऑलरेडी हैविंग दिस नेशनल स्किल मिशन हियर। दूसरी बात है कि व्हाट यू नीड इज स्पीड, स्किल, स्केल एंड स्पीड अलोंग विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर आपको पूरा फायदा उठाना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जितने नागरिक हैं या सिटीजन्स हैं उनके पास में कंप्लीट टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस का लाभ पहुंचे। गवर्नेंस नॉट जस्ट फॉर गवर्नेंस, because we are for minimum government with maximum governance. Now, how that can be possible? You all know, you've done engineering courses and I've taught optimization in the preliminary courses. तो आप सबको पता है कि जब degrees of freedom आपके limited हो, when the resource constraint is there and you have to maximize and optimize. What are the resource constraints that we are having? Time duration, the resource duration in terms of the agricultural land, in terms of the overall land, in terms of water scarcity, in terms of the finances that we have, and so on and so forth. And what is the objective function we have in mind? It's a simple maximization problem. The objective function is to maximize welfare. I'm not saying that GDP only is to be maximized. Once the welfare is to be maximized, the frame of the government or governance is to be transformed. That is what is the crux of the e-governance, and I think this seminar should lead you to understand how can you use technology for farming, how can you use technology for laborers, how when you build Aadhaar, of course, yes, but when you build labor cars, maybe more so, because they are the people who really require your help out there. So files don't move, and the electricity moves, and the quantum thing move is the key thing.
But the whole idea is technology not for the sake of technology, technology for the sake of welfare. And I think that should be the cornerstone of any seminar on governance. I'm sure during the deliberation you would understand how to use technology for farming, how to use technology and e-governance for overall. I mean, Rajasthan has got so many awards and merits in this direction, and our Honorable Chief Minister, Srimati Vasundhara Raje ji, has done a great deal of work in that area. Umesh is sitting here, he's about to clap, don't worry. Yes, we have done some real good work here, because ये एकमात्र प्रदेश ऐसा है जिसमें 53,000 ई-मित्र आज के दिन में काम कर रहे हैं। ई-मित्र प्लस की सर्विसेज हैं, छोटे से छोटा अभियान जो कि जल स्वावलंबन है या कि युवा विकास प्रेरक है, ये पेपरलेस अभियान के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। कम से कम 25 सेवाओं को राजस्थान में लगातार ई गवर्नेंस के अवार्ड्स मिले। आई एम नॉट हियर टू लिस्ट देम, इट्स नॉट माई जॉब. My job is to cut across the things and tell you what is the purpose. The purpose is to tell you that this government may be in center or may be in state. This is the government which wants to connect, which wants to communicate, which wants to collaborate with you, and therefore lots of projects would come from you. We've just done a hackathon to invite your ideas and project, because we don't want to march in the knowledge economy on our own. We want to march with you, the students and the youth, and the technical people and the professional people. I would not give you therefore a standard lecture in terms of what our government has done and what exactly we have in mind. Rather, मैं आप सबका आह्वान करूंगी कि अगर विकास एक ई क्रांति है, अगर विकास केवल एक नारा नहीं और जन आंदोलन है, तो इस विकास के वाहक केवल सरकार और उसके नुमाइंदे नहीं है, इस विकास के वाहक आप सब हैं. And till the time, and these seminars are there to make your skills for this particular purpose. अगर वाहक बनना है तो खुद को स्किल्ड करना होगा. आप सब सपने देखते हैं, लेकिन एक बड़े भारत का, एक मजबूत भारत का, एक नए भारत का सपना भी अपने सपनों के साथ जोड़िए. इस बात के आह्वान से मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी. All eminent people are there and you are eager to listen to them. But all I will say is this, कि विकास एक स्टैटिक घटना नहीं है और गवर्नेंस किसी भी विकास का अंतिम लक्ष्य नहीं है. ई गवर्नेंस वो तकनीक है जो विकास को वेलफेयर से जोड़ेगा और बहुत जल्दी जोड़ेगा. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस एकेडमिक सेमिनार के पेपर्स आप हमें भेजिए और मैं DOIT को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी इसमें से हमें बेहतरीन मिल सकता है वो हम लें. I again look forward to various opportunity to interact and interface with you as government, as a teacher and as an academic. Thank you very much.